Okay, we can start again. So CS-2, it is also of 50 marks, and in this we have 5 chapters which we have already completed our syllabus. So first chapter, Introduction to Microprocessor and Organization of 8085. It is of 21 marks. It is already there in your TPS also, that marking scheme. Instruction set and programming of 43 marks. The weightage of this chapter is more because of programming. 43 marks which I have written here, these total marks, if you count, it is of 94 marks with option. Actual paper is 50 marks which you have to attempt, but with option it is of 94 marks. So 43 marks का जो ये second chapter है, in this out of 43, 30 marks for programming and remaining 13 is theory. Theory means the instructions they can ask and other things that we will discuss. And if you see chapter 3 and chapter 4, it is of 4 marks or 8 marks. It may interchange. 8 marks can be of chapter 3 and 4 marks can be of chapter 4. And networking technology, that is of total 18 marks. So these marking scheme we have already discussed many times in the class, that what is the maximum weightage of which chapter. So 21 marks and 18 marks means first chapter and fifth chapter. If you go with theory questions, the maximum questions are from first chapter and chapter number 5. Okay, 21 marks, it may vary, as Anjana ma'am also said, it is not fixed every time. 21 can be 23 or it can be 18, 90. 43 marks can be 40 or it may be more than 43. So it may vary, but total of 94 marks paper is there, right? And so what you have to do, first you have to focus on first chapter and last networking technology. The paper chapter 3 and chapter 4, it is of 4 or 8 marks. But if you see, or which we have already done these 2 chapters, if you see, we have only 4 or 5 questions maximum from each chapter. So if you can prepare those 4 or 5 questions from these 2 chapters, then it will, for sure, you will be able to attempt questions of 4 marks and 8 marks. So you can say it is a replacement of your chapter 2 instruction set question. See, so many students are asking, ma'am, all 74 instructions we have to learn. See, yes, for programming it is required, but theory, if you want to avoid these 2 chapters can be a replacement. I'm not saying it is every time with the option of chapter 2. It is not necessary, that pattern and that the question position is not always fixed. So as you know, paper is of 3 hours and total marks of 50. Total weight, as I already said, it is of 94 marks. Now, paper pattern first I would like to share with you, or I would like to discuss with you, as this paper pattern is same for CS1 also. Ma'am have already discussed with you. And in this question 1 and question 1 and question 5 is little bit different. Question number 2, 3 and 4. Question number 2, 3 and 4, these three questions are same pattern. Means in this, if we first start with question 1, in this first part, question number 1A, it is having 4 MCQs. So as ma'am said, you have to write complete sentence, rewrite the sentence it is written to with option, with that option value or whatever the option text that you have to write in that, fill in the blank, and you have to write complete sentence. Okay, and question number B, it is of 6 marks. In this, you will be having 3 questions and you have to attempt any 2 questions. See, first is you have to attempt only the questions which you need to ask. Means 50 marks paper first you need to attempt. Don't go with all questions together. Don't go with all questions together. Means A, B, C. First you are attempting all 3 questions. You will get marks only for 2 questions, not for all 3 questions.
Okay, but if you have time after finishing up your 50 marks questions, after finishing up 50 marks question, then you can go with your extra questions. Okay, and if you have time, and I would suggest you have to attempt all. If you know all 6 programs, you attempt all 6 programs. Don't wait ki, okay, I have done my paper, so if I know, I will not write because what I have written, it is good enough. From your side, maybe it is good enough or sufficient enough, but हो सकता है जो टीचर चेक कर रहा हो उसको वो कुछ पॉइंट्स उसमें नहीं और यू मिस आउट हो गए हो आपसे और दैट इज रिक्वायर्ड. तो इफ यू हैव टाइम यू अटेम्प्ट लेटर ऑन वंस यू कंप्लीट योर complete 50 marks paper. So if the options are given to you, are only attempt first any 2 question, either A or B, not C. If you know C, you complete it, you write it in last after completion of your full complete paper. This is the suggestion for all subjects, not for me. कि पहले आप अपना 50 marks का paper पूरा attempt करो और उसके बाद if you have time और आप उसको extra questions कर सकते हैं. Similarly, 1 minute. Similarly, question number, if you see 2, this is question number 2, same pattern. It is of 6 marks question A part and 4 marks question for B part. From B part, you have to attempt only one, any one. You have given 2 questions, you have to attempt only 1 question. And question number A में you have to get 3, we have given 3 questions and you have to attempt any 2 questions. So question number 2, question number 3 का भी same pattern है. In A you have 3 questions and in B you have given 2 questions. From A part you have to attempt any 2 and from B part you have to attempt any 1. So question number 2, 3, 4 they are having same pattern. Now come to question number 5. In question number 5, as you all know, programming part जो है, in this we have 10 marks for programming. So in CS2, 10 marks में there is no options like C++ and HTML. You all have you'll have all 6 assembly language program. So any 2 you need to attempt from any one section. You have given 2 section, total 6 program. The first section में you have these 3 programs and in second section again you have 3 assembly language program. So any 2 you have to attempt from either section. ऐसे नहीं कि इसमें से एक attempt कर लिया और इसमें से एक attempt कर लिया, तो it will be considered only as one attempted. Means जो whatever the best you have, अगर आपने इसमें से एक attempt किया है और इसमें से एक attempt किया है तो marks आपको सिर्फ 5 में से ही मिलेंगे, not from 10. तो आपको पहले you have to select this module, sorry, section कि किस में से आपको कौन से ब्लॉक में से कौन से 2 जो है आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. उसके बाद अगर आपके पास टाइम है you can attempt the third one also, and if you have more time you can attempt the other part also. But first best 2 in which you are sure that yeah, I should get full marks or maximum marks if I attempt these 2 questions, to go with that. And if you have time afterwards you can attempt all 6. Many students are writing all 6 programs. So this is not like that कि आप attempt नहीं कर सकते और questions जो whatever I have done in the class, 20 to 25 questions we have done in the class, all types of questions. So if you know the concept of those 20 to 25 questions, so you can you can easily attempt with the variations. Variations किसमें होता है? ब्लॉक लेंथ चेंज कर देंगे, एड्रेसेस चेंज कर देंगे, इनपुट लोकेशंस चेंज कर देंगे, या आउटपुट इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इन रजिस्टर दे विल गिव यू सम लोकेशन, और इंस्टेड ऑफ गिविंग लोकेशन दे गिव यू एनी रजिस्टर नेम. There you have to store the answer. So इस तरह से variation से logic will remain same. Say transfer of a block. So you have 3 questions related to transfer of a block. Transfer of a block, transfer in reverse, and exchange of 2 numbers. तो इसमें variation क्या डाल सकते हैं? You have to transfer 5 numbers with 2's complement of each number. While transferring a number,
those 5 number, you have to do 2's complement of each number and transfer. So this type of variation they can give. So 2's complement, you know how to do. 1's complement you karo with the help of CMA instruction, then add increment, then add this instruction increment A. So you will be able to perform 2's complement on each number and then transfer. The concept of transfer of a block is same, but by adding these two instruction of 2's complement, you can perform that part. So इस तरह का कुछ variation आता है, but for that you should know instructions. All 74 instructions should be you should have that knowledge. थोड़ा सा मेन मैंने आपको क्लास में भी बोला था कि डेटा ट्रांसफर ग्रुप जिसको बहुत अच्छे से चलाना आता है, जिसको यूज करना आता है, वो बहुत अच्छे से प्रोग्रामिंग कर सकता है. तो डेटा ट्रांसफर जो इंस्ट्रक्शंस हैं, 13 इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट ग्रुप, वो आपको हर तरह से यूज करना है. क्योंकि व्हेन यू आर writing a program, so you are entering some data, you are inputting something. For that you need to transfer, so you need data transfer instruction. And when you are storing result, then that time also you need data transfer instruction. तो input और output के लिए आपके program में 3 ही part है, input, process और output. तो इनपुट और आउटपुट में भी अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रोसेसिंग आप इजीली कर पाते हो. प्रोसेसिंग के लिए एडिशन है तो यू आर यूजिंग एड इंस्ट्रक्शन, कुछ कंपैरिजन है तो यू कैन यूज कंपेयर इंस्ट्रक्शन, कुछ लूप सेट करना है तो यू शुड नो ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन. तो यू शुड फोकस मोर. सी, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस आर वेरी इजी. एक बार आप बैठोगे पढ़ने, आप इजीली उसको कर सकते हो. मेन आपको डेटा ट्रांसफर और ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि मुझे ब्रांचिंग कैसे यूज करनी है. एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जेसी कहाँ यूज कर सकते हैं, जेएनसी कैसे यूज कर सकते हैं, लूप यूज कर रहे हैं तो जेएनजेड जार वाली इंस्ट्रक्शंस वी आर यूजिंग मोर. तो सच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट यू शुड नो. तो उसके लिए आपको चैप्टर 2 पढ़ना बहुत जरूरी है. प्रोग्रामिंग जो है, डोंट स्किप प्रोग्रामिंग, otherwise you are losing 10 marks from your starting. From once you are coming for the exam, if you are coming for the exam at home only, you have reduced your 10 marks. Yeah, okay, we are not doing programming, तो 10 marks वहीं आपके finish हो जाते हैं. तो आपका पेपर आउट ऑफ 40 हो जाएगा इंस्टेड आउट ऑफ 50. तो डोंट डू दैट. इनिशियलाइजेशन भी आप करते हो, काउंटर सेट भी करते हो, तो भी आपको 1.5-2 मार्क्स मिलते हैं. ठीक है. और टेबल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि आपको टेबल किस तरह से बनानी है प्रोग्रामिंग में. टेबल के लिए यू डोंट रिक्वायर एनी हेक्स कोड. डोंट आस्क हेक्स कोड फॉर योर थियरी एग्जाम. वो कॉलम ही नहीं चाहिए. आपको सिर्फ कौन सा कॉलम चाहिए? लेबल, निमोनिक्स एंड कमेंट. एड्रेस वाला कॉलम भी आप स्किप कर सकते हो. ओके, एड्रेस वाला कॉलम भी आप स्किप कर सकते हो. आई एम रिपीटिंग अगेन, उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप एड्रेस वाला कॉलम भी स्किप कर सकते. क्लियर है आप लोगों को? तो सिर्फ आपको लेबल यूज करना है, क्योंकि हम जंप इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं तो लूप सेट करते हैं. वी नीड टू राइट लेबल कि हम जंप करके कहाँ से जा रहे हैं. कमेंट सेक्शन इज आल्सो कंपल्सरी. 1 mark is there for comments. If you are not writing comments, you will lose 1 mark. आपका पूरा प्रोग्राम करेक्ट है. If you have written complete program, correct program, then also you will get 4 marks because you have not written comment section. तो comment जो है, it is according to instruction you can write. If you are using LXI HC050 like इस तरह का instruction है, तो you just write initialize HL register pair with memory location C050. Increment A, you are incrementing the content of A. So this way you can use simple statements for writing comments. Okay. तो दिस इज अबाउट प्रोग्रामिंग. तो प्रोग्रामिंग आपको बिल्कुल नहीं नेग्लेक्ट करना है. Try for programming. After your main exam, you will have that 10 days. So you can come to the college. You can again
write here. Again, you can learn, you can practice all programs, whatever we have done in the class. Okay, next जो है नेक्स्ट जो है हम लोगों का 1 minute, I will clear the screen. Next is important points. Ma'am has already discussed all these points that you have to write complete MCQ sentence and underline the answer. Proper sequence में paper attempt करना है, mess नहीं करना paper. If you are writing question number 1, to attempt all options. Question number 1A, question number 1A के सारे MCQ, then question number 1B के all 3 क्वेश्चंस में से जो 2 क्वेश्चंस है वो आप करो, उसके बाद एक्स्ट्रा आप लास्ट में करो. तो you have to maintain your sequence 1 2 3 4 5 this way you have to write. Don't mess up with that कि अच्छा 1 अभी याद आया तो 2 के बाद में कर दिया उसका एक पार्ट, 2 का क्वेश्चन याद आया तो लास्ट में 4th के साथ ही ABC के साथ आपने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा. If you are not sure, leave the space कि ओके अभी मुझे नहीं इस पे टाइम वेस्ट करना है. आई शुड राइट इट आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ माय क्वेश्चन विच आई नो. उसके बाद ही मैं इसको कर सकता हूँ. तो लीव दैट स्पेस के आफ्टर राइटिंग ऑल क्वेश्चन आई कम एंड आई कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट क्वेश्चन. उसको लास्ट में नहीं लिखना है. और 3 marks के लिए as also ma'am said 3 to 6 valid points you have to write. Sometimes for 3 marks के question में they are asking write 6 features. ओके जैसे माइक्रो कंट्रोलर है, राइट 6 फीचर्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर. तो 3 marks में दे कैन आस्क 6 points ऑल्सो. तो इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है, राइट 6 फीचर्स ऑफ 80-85 माइक्रो प्रोसेसर. तो हाफ मार्क्स फॉर ईच फीचर. ओके वैसे अगर नॉर्मल क्वेश्चन है तो एटलीस्ट और मिनिमम जैसे कोई डिफरेंस पूछा है, राइट द डिफरेंस बिटवीन यूटीपी एंड एसटीपी, तो यू हैव टू राइट 3 minimum valid point. Okay, and for 4 marks question you have to write 4 minimum valid point. If you know all, if you know correctly, then only write. If you are not sure about that, don't write. But 4 valid point लिखो, and if you know, you write it. ऐसे नहीं है कि 1 mark में पूछा है तो ओनली आई विल राइट ओनली 1 point. और जैसे पिन्स के बारे में पूछते हैं, इंस्ट्रक्शंस के बारे में पूछते हैं, तो डोंट राइट ओनली अबाउट सिंगल लाइन फंक्शन. इंस्ट्रक्शन है तो यू राइट अबाउट द फंक्शन, यू राइट अबाउट द एड्रेसिंग मोड, यू राइट अबाउट number of bytes of that instruction, you give example. If they are not asking, then also you have to give example. Similarly, for networking chapter, if they have not asked for diagram, then also you have to draw diagram. What is hub? Write the types of hub. Hub में उन्होंने question में पूछा what is hub? Write the types of hub. Then also you draw the diagram of hub. जो star topology में आप diagram बनाते हो, वही diagram आप hub के लिए बना सकते. ठीक है? And if it is in 1 mark, then also you draw the diagram. Don't say 3 hours is more than enough to write this 50 marks paper. आपके पास बहुत टाइम है, आप अच्छे से पेपर लिख सकते हैं. तो जितना मैक्सिमम आप इलैबोरेट करके लिख सकते हैं पेपर में लिखिए. एंड टीपीएस के क्वेश्चंस जो हैं, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, वो अच्छे से करो, जो बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं. दैट यू हैव टू डू अगेन एंड अगेन एंड अगेन. उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो. ऑपकोड इज नॉट नेसेसरी मुस्कान फॉर थियोरी एग्जाम. थ्योरी एग्जाम के लिए ऑपकोड की जरूरत नहीं है. हेक्स कोड वाला कॉलम जो आपने जर्नल का जो पैटर्न है, तो उसमें जो फर्स्ट 2 कॉलम है एड्रेस and opcode, you can leave that part in for your theory exam. You no need to write and no need to ask for hex code in your theory exam. Clear? So point wise answers लिखो.
थ्री, क्योंकि पॉइंट वाइज में क्या है, अगर इफ यू हैव रिटन 3 वैलिड पॉइंट फॉर 3 मार्क्स तो यू विल गेट गुड मार्क्स, यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स। डायग्राम जो है पेंसिल से बनाओ, प्रॉपर लेबल करो। इफ दे आर आस्किंग फॉर कोएक्सियल केबल तो यू राइट और ड्रॉ द डायग्राम एंड गिव द पुट लेबल्स आल्सो। उसमें सब मार्किंग करो कि व्हाट इज द जैकेट, उसमें इनर इंडक्टर, आउटर जो कंडक्टर है, जैकेट क्या है, इंसुलेटर क्या है, लेबल है। सेम फॉर फाइबर ऑप्टिक केबल, यूटीपी केबल्स। तो जहां जहां वेर एवर यू नीड डायग्राम, यू प्लीज ड्रॉ एंड लेबल इट प्रॉपर। और जो कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको ऐसे नहीं लिखो, कॉलम करके लिखो, लेफ्ट साइड राइट साइड करके। ऐसे नहीं फर्स्ट यू राइट अबाउट द फर्स्ट, इफ आई एम आस्किंग फॉर लाइक मैंने पूछा यूटीपी एसटीपी, तो डोंट राइट 3 पॉइंट्स फर्स्ट यूटीपी एंड देन 3 पॉइंट फॉर एसटीपी, नो। इफ इट इज कंपैरिजन तो 1 to 1 कंपैरिजन होना चाहिए हर एक पॉइंट का। तो कॉलम बना के आपको पॉइंट लिखना है। व्हाइटनर यूज नहीं करने हैं आंसर शीट में, और चेंज पेन का कलर भी चेंज नहीं करना। इफ यू आर राइटिंग विद ब्लू पेन तो राइट विद ब्लू पेन ऑल्सो, यू कैन चेंज पेन but not the color of the pen. Okay, and this is time management of paper. So in this, you will be having 5 questions. The first question to, from my point of view, you should give only 20 minutes, because in this first question is only of MCQ, 4 marks. 4 MCQs are there, so hardly it will take 5 to 6 minutes, and 15 minutes you can give to next question number 1B. And other question number second, third, and fourth, you can take 30 minutes for each question, because in this you have to write 4 questions, 2 questions from part A and 1 question from part B. So you need to write 3 questions, so 30 minutes are more than enough to write 3 questions. And then programming questions है, तो अच्छे से लिखो, प्रॉपर टेबल बना के लिखो, रफली मत लिखो, कॉलम्स बनाओ, लेबल करो ऊपर, व्हाट इज निमोनिक, व्हाट इज लेबल, लेबल कमेंट क्या है, प्रॉपर उसको डिवाइड करके कमेंट्स पूरे पूरे प्रॉपरली लिखो, लॉजिक लिखो। तो उसके लिए मैंने क्यों टाइम दिया है कि फर्स्ट यू राइट योर लॉजिक रफ, इन रफ, लास्ट में आप रफ में लिखो उसको, और उसके बाद इफ इट इज वर्किंग प्रॉपरली, योर लॉजिक इज वर्किंग प्रॉपरली, इफ इट इज एवरीथिंग इज करेक्ट, देन यू डू इट फाइनली। उसमें कटिंग मत कर, ठीक है। ब्लैक पेन ऑल्सो यू कैन यूज, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट इट शुड बी विद वन। Either if you are starting with black, then complete with black only, don't change with black and blue, ऐसे switch नहीं करो, ठीक है। And try to do extra questions if you have time, especially programming part अच्छे से करो। 10 marks की programming है, and you can score full 10 marks in this. There is बहुत से simple program आते हैं, transfer program, occurrence of the program, smallest number, largest number, odd, even, multiplication, यही जो है 15 to 20 program वही circulate घूमते रहते हैं। So don't worry about the programs. If you know the concept of instruction set, you can easily do all. Okay, and TPS, for CS2, I would suggest that you have to go with TPS. It is given in point wise, to point wise you can prepare, and जितने भी questions पूछे जा रहे हैं बार बार repeat हो रहे हैं एग्जाम में, that you have to do properly, अच्छे से करना है। And you revise TPS question at least 3 to 5 times, read 3-4 times your TPS. So many students are asking that we can write in our language. Yes, you can write in your language. Magab to karna nahi hai, but once you read your textbook or TPS 3 to 4 times, your language will be your book language. तो आप कुछ अलग से लैंग्वेज यूज नहीं करते हो, आप जो भी 3 to 4 times if you have read your book, तो your language is same like your textbook language. So at least it is my suggestion, 3 to 4 times you revise your TPS questions, okay? और 5 years questions जो लेटेस्ट अभी लास्ट 5 years के questions हैं TPS में दिए हुए हैं लास्ट में, आपको वो रिवाइज करने हैं, all 5, minimum 5 papers,
you need to revise. उसके questions देखो, pattern देखो, किस तरह के questions हैं, that you have to do. And I want to show you paper also. One minute now. So you can see paper. This is CS-2 paper, and instructions are same. All questions are compulsory. Figures जो है to write indicate full marks. Draw neat diagram wherever necessary. Use of any type of calculator is not allowed. Comments are must be in assembly language program. So you can see it is also given in the instruction that you need to write comments in your assembly language program. So this is part of instruction. So you have to follow this. Okay. So you can see question 1A in this. You have 4 MCQ, easy MCQs आते हैं. If you know the concept, question number 1A में you have 5. You can see this 8085 microprocessor consists of dash general purpose register. तो you all know 6 general purpose, but इस time में ये वाले पेपर में सबने mostly 8 लिखा था, क्योंकि सब बच्चे क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग मॉडल देखते हैं और उसमें एक्यूमुलेटर और फ्लैग रजिस्टर भी इंक्लूडेड होता है. और मोस्टली 90% बच्चों ने लिखा कि 8085 has 8 general purpose register, but it is not. It is 6 B C D E H L. So this is wrong option. But बहुत सारे बच्चों को प्रोग्रामिंग मॉडल का डायग्राम याद था और अकॉर्डिंगली दे वर थिंकिंग कि ओके वी हैव 8 जनरल पर्पस रजिस्टर. तो ये छोटे छोटे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस हैं, तो उसके लिए थोरो नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट शुड बी रिक्वायर्ड. ओके, सो दिस वे यू कैन सी 4 क्वेश्चंस. अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर डी है एमसीक्यू का, दिस वाज आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन जो था आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, और इसके लिए फिर फुल मार्क्स जो भी डाउट ऑफ बेनिफिट और ग्रेड्स मार्क्स मिले हैं. तो इफ यू आर नॉट श्योर देन आल्सो यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, एटलीस्ट यू राइट द क्वेश्चन नंबर विद ऑप्शन, दैट्स ऑल, देन आल्सो यू विल गेट फुल मार्क्स. तो ये तो हम क्लास में भी बताते ही रहते हैं. और फ्लैग का जो क्वेश्चन है वो अच्छे से करना है. एवरी ईयर इट इज देयर इन फ्लैग, it is there in your question paper. Flag register ka theory as well as that bit pattern question. If the content of flag register is this, what is the meaning of each flag, interpret the meaning of each flag. So sign flag 0 सबका आपको कि when they are set, when they are reset. Sign flag when it is set, when it is reset. So that you should know. Okay, and if they are asking for 4 characteristics of coaxial, characteristics means all 6 characteristics you should know. That is transmission media के जो 6 characteristics है, cost, installation requirement, bandwidth, band usage, attenuation, or immunity from electromagnetic interference. So any 4 characteristics of that coaxial cable you can write. ओके, सो अगर ये 1 मार्क का जैसे ये पेन्स पूछे हैं 1 मार्क में, तो यू राइट अबाउट एवरीथिंग ऑफ एसटीडी. ये अब देखो, ये एसटीडी कुछ है क्या? एसटीडी कुछ है नहीं है. तो दिस इज रॉन्ग, प्रिंटिंग मिस्टेक. फॉर दिस यू विल गेट 1 full marks. This SID pin, SID pin, serial input data pin, but here it is printed wrong. It is written STD, and if it is STD तो that means आपको पता ही है कि माइक्रोप्रोसेसर में ऐसा कोई भी पिन नहीं है. तो it is right. Write about question number 2AC first part. छोड़ दो, स्पेस छोड़ दो, 2-3 लाइनें, and attempt this second and third. You will get full mark, 1 mark for it. तो इस तरह के बहुत सारे प्रिंटिंग मिस्टेक होते हैं एग्जाम में, और आप उसको बेनिफिट कर सकते हैं, यूज बेनिफिट मिल सकता है. ठीक है. एंड एक और इसमें क्वेश्चन था, अभी ये मैं क्यों दिखा रही हूँ लास्ट ईयर का पेपर. ये क्वेश्चन देखो,
explain the following instruction of 8085 microprocessor, but they have not given any instruction. It is written, explain which instruction. We have all 74 instructions. So it is incomplete question. So you will get full 3 marks for this question. Now you can see 3, 4, 5. In last year paper 5 marks का grace mark तो ऐसे ही मिला है. Understood? तो अगर इस तरह का जहाँ पे आपको लग रहा है कि this question is not correct और incomplete है, तो please attempt first that part. Please write question number 3A. So you will get full 3 marks question. तो ये जो question है complete नहीं है, इसमें instructions दिए ही नहीं कौन से हमें लिखने हैं. Clear? तो इस तरह के जो भी questions हैं उनको तो पहले attempt करो. इस तरह का question आता है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन डेटा दिया है और इंस्ट्रक्शन तो डोंट राइट आंसर डायरेक्टली, इसमें आंसर डायरेक्ट नहीं लिखना है. यू हैव टू सॉल्व दिस. ORAL means you have to show the OR operation between accumulator contents and the L register content. तो उसको रफ में लास्ट पेज पे सॉल्व करके डायरेक्टली यहाँ आंसर नहीं लिख दे, वो पूरा स्टेप यहाँ पर आपको दिखाना है. बहुत सारे बच्चे लास्ट में सॉल्व करते हैं और यहाँ सिर्फ आंसर लिखते हैं, आंसर के सिर्फ हाफ मार्क मिलेंगे. यू विल नॉट गेट फुल 1 mark फॉर दिस बिकॉज यू हैव नॉट रिटन और सॉल्व दैट क्वेश्चन. ओके, तो ये पूरा का पूरा बाइनरी में इन डेटा को कन्वर्ट करो, सॉल्व करो और उसके बाद जो भी आंसर आएगा अगेन यू हैव टू राइट इन हेक्साडेसिमल फॉर्म. ओके, तो ये क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो. स्कोरिंग क्वेश्चन है, ये करना है आपको. कंपैरिजन वाला क्वेश्चन कोई आता है तो कॉलम बनाओ, इधर यूटीपी लिखो, इधर एसटीपी लिखो एंड राइट मिनिमम 4 पॉइंट इफ यू हैव 4 मार्क्स क्वेश्चन. ओके, और इस तरह का क्वेश्चन भी आता है. ये क्वेश्चन कम आता है, पर जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें they have given you 6 instruction and you have to write the addressing mode of each instruction. So you can easily write because you know the concept that if it is 1 byte instruction then अच्छा वो तो ना लेंथ के लिए हो गया. they are asking for addressing. तो अगर एड्रेस दिया हुआ है तो दिस इज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. रजिस्टर दिया है तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. आई दिया है तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. एम दिया है तो इट इज मेमोरी एड्रेसिंग मोड. और दिस इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. दिस इज आल्सो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. ओके, और ये इस तरह का बेसिक क्वेश्चन. लैंडमैन वैन मैन बहुत सारे बच्चों को लास्ट तक पता नहीं होता. दिस इज मीडियम एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. So that you should know the difference. बहुत basic question है but बहुत बार आया हुआ है. Okay, तो इस तरह से आपका question paper pattern है. These are 6 questions. ये programming questions है. तो उसके लिए टेबल बनाना है, properly टेबल फॉर्म में लिखना है. Aryan, this is not done intentionally, Aryan. बट पेपर सिलेक्शन होता है, पेपर डिस्क्लोज नहीं होता और जब सिलेक्शन होता है तो उसको कोई क्रॉस चेक नहीं करता तो डायरेक्टली पेपर मिलता है आपको. तो वी हैव 4 to 5 पेपर्स, उसमें से एक पेपर सिलेक्ट होता है. तो किसका सिलेक्ट हुआ वो मालूम नहीं, तो उसमें जो जो मिस्टेक्स हैं वो वैसे के वैसे आ जाए. तो दिस इज नॉट डन इंटेंशनली, मे बी, आई डोंट नो. ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो रीड क्वेश्चंस केयरफुली. कोई भी एक आप अटेम्प्ट करो क्वेश्चन. एनी को इस तरह का कोई भी एक जो भी ब्लॉक आपको जिसमें से आपको लगता है कि एनी टू बेस्ट टू आई कैन राइट, आई नो दिस प्रॉपरली, तो फर्स्ट अटेम्प्ट दैट एंड देन इफ यू हैव टाइम तो यू कैन अटेम्प्ट ऑल. तो कॉलम कौन कौन से बनाने हैं? सिर्फ 3 कॉलम, लेबल, निमोनिक्स एंड कमेंट. यहाँ पे लेबल बनाना है, निमोनिक्स एंड देन कमेंट, दैट्स ऑल. और कोई कॉलम बनाने की जरूरत इसमें नहीं. So if you have any doubt so you can ask. You can write in chat box. So this is all about CS2 moderator session. Still, if you have doubt, you can come to college and ask.
No issue. We are here for you.